The first on the list is microphone. सर ये हमें पता है माइक्रोफोन, because word phony, the word phony is basically for sound and micro is basically small. So वो इंस्ट्रूमेंट जो छोटी छोटी आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए या सुनने के लिए काम आता है, that is a microphone. Xylophone, again an instrument, and the word phony is attached to it. So जब जहां जहां phony हो तुम्हें समझ में आना चाहिए that is the word related to sound obviously. So when we are talking about xylophone, it's an instrument which produce sound and that's why it is called as xylophone. टेलीफोन, हाँ सर ये तो हमारे लिए आज शॉकिंग था कि टेलीफोन का भी मतलब होता है. नेक्स्ट इज सिम्फनी. यस सर हमें पता है इसके कूलर आते थे. ना बाबा ना, हम कूलर की बात नहीं कर रहे हैं. फोनी मतलब साउंड, फोनी मतलब साउंड एंड सिम का मतलब क्या होता है? सिमिलर या फिर टुगेदर, सिमिलर या फिर टुगेदर. The artists were singing in symphony, right? They were playing the guitar in symphony. Someone making a similar sound or sounds together sound, that is what a symphony is all about. Then the next word is phonograph. What is phonograph? सर आपने हमें याद है ग्राफी का मतलब कुछ बता रहे थे आप, राइटिंग. आपने हमें ग्राफी का मतलब बताया है राइटिंग और फोनी का मतलब आप हमारे को बता रखे हो साउंड. तो ये क्या साउंड की राइटिंग है? बिल्कुल. राइटिंग ऑफ अ साउंड इज फोनोग्राफ. राइटिंग ऑफ साउंड, राइट? सो राइटिंग ऑफ साउंड, साउंड भी रिकॉर्ड होती है, साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है. और कई बार आप सुनेंगे महात्मा गांधी जी की आवाज रिकॉर्ड हुई या जवाहरलाल नेहरू जी की आवाज रिकॉर्ड हुई. स्पीच रिकॉर्ड नहीं, आपको हवा में हवा में मिलती है साउंड्स. दैट इज phonograph. अब ये नहीं ढूंढने निकल पड़ना that there is a science separately on this, right? Phonics, I have talked about this. Phonetics की हमने बात करी थी. मेगाफोन, जैसे माइक्रोफोन है वैसे मेगाफोन है जो कि बड़ी आवाजों को, बिग साउंड्स को कैप्चर करे. That is a megaphone. Then is euphony. What is euphony? Sir, I remember आपने odd word out में कराया था जहां पर word थे choral, euphony. There was a word called as symphony. ऐसे कुछ words हमें दिख रहे थे. What is this euphony? Euphony is a good sound. A good sound is euphony because phony का मतलब होता है sound और eu, इलू नहीं है ये, इलू नहीं है, eu, eu का मतलब होता है good. A good sound is known as euphony. So next time अगर कोई तुम्हारे को अच्छा साउंड लगे और आसपास रिलेटिव बैठे हो तो ये बोलना it's euphonic. This is a euphonic sound. सामने वाला रिस्पेक्ट से देखना चाहिए. That's how you need to remember the words. Euphony, a good sound. And then is a cacophony. Cacophony is a bad sound because the word caco, the word caco, caco का मतलब होता है bad. Caco का मतलब होता है bad. So a bad sound is known as cacophony. As I said, we will be having many more words today. And आपको कई words बीच में आ रहे हैं. Please note this down, guys. आप अगर screenshot लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा because आपको याद नहीं होगा, right? And then is, sorry I missed this word, polyphonic. Then there is a word called as polyphonic. Polyphonic का मतलब क्या होता है? Multiple. So poly is multiple. A multiple sound is polyphonic. A multiple sound is polyphonic. Many sounds or a multiple sound is polyphonic. So these are the words related to phony, related to sound. Let's move to the next set of the words. The next word is oops, this much. हम इन सारे words की बात करेंगे. ये क्या दे रखा है सर, ये है क्या वो तो बता दो. We are talking about ear, we are talking about tongue, nose, kidney, liver, heart, bone, a pregnant woman. So which means we are now talking about doctors. We are now talking about doctors, guys. Let's see, कुछ डॉक्टर्स की हम लोग बात करते हैं और उनको रूट वर्ड से रिलेट करने की कोशिश करते हैं. The first is cardiologist. कई बार मैंने देखा है हॉस्पिटल के अंदर हम एंटर किए और सामने रिसेप्शन है और रिसेप्शन के पीछे लिखा हुआ है कार्डियो सर्जन मिस्टर MS शर्मा.
और हम बोल रहे हैं मैम ये हार्ट का डॉक्टर कहां मिलेगा? गाइस पीछे लिखा हुआ है कार्डियोलॉजिस्ट। हम पढ़े लिखे, हम देश के युवा, हम ऐसी बातें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, राइट? सो द वर्ड कार्डियो, कई बार आपने सुना होगा दैट ऋषि कपूर died of a cardiac arrest, or let's say husband of Mandira Bedi died Kunal some Kohli or something died of a cardiac arrest. What is this cardiac? Cardiac का मतलब होता है हार्ट, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। इसका एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आप में से कई लोग जिम विम का भूत सवार हुआ होगा अभी लॉकडाउन के वक्त। सो जैसे आप जिम इंस्ट्रक्टर के पास जाते हो और उससे आप बोलते हो कि मुझे बताओ मुझे क्या क्या एक्सरसाइज करना है, और वो पहली चीज बोलता है कार्डियो कर लो, और हम जाके भागना शुरू कर देते हैं। पता ही नहीं है कार्डियो है क्या। वो कार्डियो क्या बोल रहा है? कार्डियो रिलेटेड एक्सरसाइज जिससे तुम वेट लॉस करोगे, राइट? दैट इज कार्डियोलॉजिस्ट। The word IST इसका भी मतलब है लॉजी, इसका भी मतलब है लेट्स सी। ये वर्ड 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, 3 वर्ड से मिलके। कौन कौन से सर? कार्डी बेसिकली इज हार्ट, कार्डियक बेसिकली मींस हार्ट, लॉजी बेसिकली मींस स्टडी, हार्ट दिल की स्टडी भी होती है सर? बताओ ना सर, हमारे को भी करानी है। अरे भैया वैसे दिल की स्टडी कोई नहीं कर सकता है। IST इज अ फॉलोअर, someone who is a follower or studies about heart related problem is a cardiologist. Here we go. You will always remember these words. Please you have to, right? इससे एक और वर्ड रिलेट करता हूं मैं, ECG। मैंने क्या बोला था? हम मल्टीपल वर्ड्स बीच बीच में लाते रहेंगे, राइट? इससे एक और वर्ड अगर आप देखोगे ECG। What is this ECG? ये ECG क्या है? इलेक्ट्रो, E का मतलब इलेक्ट्रो, C का मतलब कार्डियो और G का मतलब ग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सर वो ECG जो मतलब हार्ट को ऐसे ऐसे करके बताती है, हाँ वही ECG हॉस्पिटल में निकालते हैं जब भी किसी को डाउट होता है डॉक्टर को that he might have a heart related problem, let's take the ECG. ECG is a electrocardiography. इलेक्ट्रोकार्डियो, हार्ट की राइटिंग, ग्राफी स्टैंड्स फॉर राइटिंग, हार्ट की राइटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। Wow, right? So this is what this ECG is all about. Let's move to the next. Next is dermatologist. गए हुए हैं सर, थोड़े से भी कील मुहासे हो जाते हैं हम इनके पास पहुंच जाते हैं। बड़ी अच्छी खासी सी जिंदगी है इनकी। Dermatologist is skin related. So when cardiologist I am talking about is heart related, skin related problem जो treat करता है उसको बोलते हैं dermatologist। क्या है ये डर्मेटोलॉजिस्ट? कहां से आया है वर्ड? ये वर्ड आया है डर्मा, बर्मा नहीं, डर्मा। डर्मा का मतलब स्किन, डर्मा का मतलब स्किन। याद करो वो 10वीं 11वीं की कहानी, जब आपको साइंस में पढ़ाया जाता था स्किन की 3 लेयर होती हैं। सर हमने अगर उस टाइम पढ़ा होता तो आज आपका वीडियो सुनने की नौबत नहीं आती। हाँ, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मीजोडर्मिस। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मीजोडर्मिस, ये 3 लेयर होती हैं स्किन की, which means एपिडर्मिस क्या है? It's the outer layer of the skin. It is the outer layer of the skin. एंडोडर्मिस क्या है? ये है सर इनर लेयर ऑफ स्किन। और मीजोडर्मिस क्या है? ये है मिडल लेयर ऑफ स्किन। सो दीज आर द 3 स्किन लेयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, जहां से वर्ड आया है। एक और वर्ड इससे देख सकते हो, ठंडा ठंडा, कूल कूल, डर्मी कूल। डर्मी कूल जो आपकी स्किन को ठंडा करे इज डर्मी कूल। ये ऐसे ही वर्ड्स आपको याद रहेंगे गाइस। और आपको शायद अभी हंसी आ रही होगी, बट ये रिमेंबर आप वर्ड्स याद करने के लिए ये चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड यहां पर आ रहा है, द वर्ड इज पैकिडर्म। द वर्ड इज PACHY, pachyderm. The word is pachyderm. What do you mean by the word pachyderm? Pachyderm होता है मोटी चमड़ी वाला, मोटी खाल वाला। Animals like buffalo, crocodile, इनको हम बोलते हैं pachyderm. Pachyderm मतलब a thick skinned animal, a thick skinned animal। और यही वर्ड हम लोग
हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी यूज करते हैं कि यार मोटी चमड़ी है, इसको डीठा है, कोई असर नहीं पड़ता। तो मम्मी अगर अगली बार ऐसे बोले तो उनको बोल देना प्लीज डोंट से दैट, से आई एम अ पैकीडर्म, राइट? सो दैट्स हाउ द वर्ड्स आर रिलेटेड। एंड देन okay, so these are the words. Let's move to the next. Please note these words down. I am sure you must have taken the screenshot or let's say noted the words. I always say you should note the words. Then is hepatologist. Very sorry guys. That next is a hepatologist. क्या है ये hepatologist? किसके डॉक्टर को बोलते हैं hepatologist? So hepatologist वो है जो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम को सही करे, उसको बोला जाता है हिपैटोलॉजिस्ट। हेप्टा बेसिकली स्टैंड्स फॉर लीवर। नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिस्ट। सर ये हमें पता है, ब्रेन का डॉक्टर, दिमाग का डॉक्टर इज न्यूरोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट किसके डॉक्टर को बोलते हैं? किडनी के डॉक्टर को। किडनी के डॉक्टर को बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी के डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट, वुमेन के डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। गाइस ये वर्ड रूट वर्ड से आए हुए हैं, जहां कार्डियक के लिए मैं बोल रहा हूं हार्ट, डर्मा के लिए बोल रहा हूं स्किन। हिपेटिस इज बेसिकली फॉर लिवर, न्यूरो इज बेसिकली फॉर न्यूरॉन्स, ब्रेन, nephron is basically for kidney, and gynae is basically for women. So these are how the words or the root words are related. Next is obstetricians. What is obstetrician? ये obstetrician क्या है? Guys, there is a difference between a gynecologist and a obstetrician. Yes, they can be same. They can be same. Gynecologist is someone who takes care of women related problem, and obstetrician is a doctor who takes care of pregnant women. Specifically pregnant women is a obstetrician. So it is basically that all obstetricians, all gynecologists can be called as obstetrician, but all obstetrician cannot be called as gynecologist. So this is wrong, this is right, that obstetrician can come under gynecologist because gynecologist is someone who takes care of women related problems, right? So this is the word obstetrician is all. Next is oncologist, someone who takes care of cancer related problem. Someone who takes care of cancer related problem is a oncologist. Ophtha, the word ophtha stands for eyes. The word ophtha stands for eyes. So ophthalmologist क्या होगा? Eye related doctor is a ophthalmologist. Then is pathologist. समझना इसको अच्छी तरीके से। हम लोग जब ये अभी कोविड हो रहा था, कोविड-19 का टाइम था, हम लोग पैथोलॉजी लैब्स के अंदर जाते थे टेस्ट कराने के लिए। व्हाट इज दिस पैथोलॉजी लैब? और हु इज अ पैथोलॉजिस्ट? अंडरस्टैंड, पैथोलॉजी लैब के अंदर किसका टेस्ट होता है? पैथोजेंस का। पैथोलॉजी लैब में किसका टेस्ट होता है? पैथोजेंस का। ये पैथोजेंस क्या है? ये पैथोजेंस है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These pathogens, and COVID-19 is one of them. Not because COVID-19 is coming from Wuhan laboratory. फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? बॉडी के अलावा। ऐसा मत समझना जो फॉरेन से ट्रेवल करके आए। सो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम लोग पैथोजेंस। और पैथोजन की स्टडी कौन करता है? पैथोलॉजिस्ट। कहां पर? पैथोलॉजी, राइट? सो दिस इज हाउ द वर्ड्स आर रिलेटेड। पीडियाट्रिशियंस हम लोगों ने बात कर चुके हैं, ऑर्थोपेडिक्स हम बात कर चुके हैं। पॉडियाट्रिस्ट, पॉडियाट्रिस्ट क्या है? सो द वर्ड पीडिया एंड पॉडिया आर डिफरेंट। द वर्ड पीडिया एंड पॉडिया आर डिफरेंट। द वर्ड पोडिया, ये कहां से आ रहा है? तो सुना, पोडियम। स्टेज पे क्या होता है? स्टेज पे जहां से लोग स्पीच डिलीवर करते हैं, दैट इज पोडियम। सो पोडियम बेसिकली कहां से आया है? पोडियम का मतलब क्या होता है? पैर, फीट। पोडियम का मतलब क्या होता है? फीट और लेग्स। वहीं से आया है पोडियाट्रिस्ट, जो कि टांगों मतलब योर लेग्स रिलेटेड प्रॉब्लम को जो ट्रीट करे इज अ
podiatrist. So these are the words, these are the doctors, and that the idea of showing this is that root words will play a very important role in vocabulary building, be it any which way or anywhere you go. So these are the words. You should note this down quickly. I have done this a little bit faster because assuming that you guys know the doctors, इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे चला हूं. तो इसके लिए आप थोड़ा और इसको स्क्रीनशॉट लो या लिखो, whatever you want to do, please do that. Okay, let's move. थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं. Okay, where are we now? Okay, here we go. The words related to astronaut or Esther. हम next word जो ले रहे हैं related to Esther, which means star. Let's see the words here. Let's see कुछ words को देखते हैं हम लोग यहाँ पर Esther से या star से related. Astrologer, वो आदमी जो तारों की दिशा या दशा देख के आपके भविष्य के बारे में बताए, उसको क्या बोला जाता है? Astrologer. और astrologer कहां से आया है? From the word Esther. It's coming from the word Esther. Who is an astrologer? He is a guy who you know, he just predicts. He predicts your future. He predicts your future by by seeing the position of the stars is a astrologer. Okay, so that's an astrologer for you. Astronomer. Who is an astronomer? Astronomer जो कि तारों की heavenly bodies की study करे, जो कि someone who studies about heavenly bodies, someone who studies about heavenly bodies such as star, moons, etc. is a astronomer. Astrophile. Remember, I don't know if we have read this word. Yeah, we have seen the word philanthropist in the first video, and there I was talking the word phil, phil matlab प्यार, love. Who is an astrophile? I am sure अब आपको meaning पता लग गया होगा. Phil is basically love, and astro is star. So love for heavenly bodies. Love for heavenly bodies. Love for heavenly bodies is a astrophile. Next is asteroid. Again a heavenly body जो कि ऊपर है. Something related to Esther. A heavenly body related to star is a asteroid. Astrology. Study. Astrology again. It is study of star or other heavenly bodies is astrology. Astrozoa is a type of a heavenly body. It's one kind of a heavenly body is astrozoa. Astronaut जो कि heavenly space पर जाएं, उसको हम लोग बोलते हैं astronaut. So all these words related to Esther, which means star, और context जो use होता है, context which is used is heavenly bodies. So astrologer जो हमारा भविष्य है और future predict करता है. Astronomer again someone who has an interest in heavenly bodies. I mean who studies about heavenly bodies. Love for heavenly bodies. A type of heavenly body, astrozoa and asteroid. Astrology again study of star, and we are talking about astronaut. So these are the words related to Esther. Then the last word here is astronautical. So what is this astronautical? It is how we measure the distance. How we measure the distance between a astronomical body is astronautical miles. With the help of this astronautical thing, we measure the distance between the heavenly bodies. So that's astronautical. Okay, let's move to the next. And the next on the list is, here we go, sir. इसने जितना परेशान किया है last 1.5 year के अंदर, we are now tired of listening to this siren. And the next is, okay, let's see some of the words related to ambulance. Let's see some of the words related to this. When we talk about this van, when we talk about this vehicle, when we talk about this particular, ambulance, something negative comes up, right? And in this particular, the kind of time which we are into, that's very negative feeling which it gives. Ambulance. Have you ever thought of, again the inquisitiveness, that why it is called ambulance? Why? Sir, itna time nahi hai.
I know, and that's why I am here to teach you why this is called ambulance. Word कहां से आ रहा है? ये word आ रहा है ambule से. This word is coming from ambule, which means to walk. Walk, walk, walk. Ambule means to walk, right? That's what the word is all about. Walk. Now, what is this ambule? Ambulance. In again older times, पुरानी सती में ले चलते हैं. When there was a war situation, many soldiers used to get wounded. They were kind of, not in their good shape. They get hurt while, fighting. वो wounded हो जाते थे, मर जाते थे. They die also sometimes. At that point of time, there were two persons with the stretcher. I mean, few persons obviously. दो लोग, when they are with the stretcher, they used to go into that war front where the fighting is going on, pick that soldier up, and used to bring back to the safe position where he or she can be treated. Specifically he at that point of time. So there we are using the word ambule. So ambule का मतलब होता है to walk, and ambulance का basically मतलब होता है to walk aimlessly, just going to that particular thing and coming back. So with the stretcher, two person carrying that particular soldier is an ambulance. And that's what this vehicle does. There are two persons there, a driver or let's say a helper, and they just on a stretcher ensures that if let's say someone who is in the problem, who is hurt, accident ho gaya hai, they carry this and ensure that he reaches to the hospital and care can be taken of him or her. That is what the ambulance is all about. And then the word related to this is preamble. Before the constitution, what is this preamble? We are writing this constitution, or this constitution should ensure that the sovereignty, or for that the sovereignty of the nation, the secularism of the nation, the brotherhood of the nation, or everything is justice should be provided to all, equality, liberty. ये सारी चीजें किसमें दी गई हैं? प्रियम्बल में. प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लिखा गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों को फॉलो करेगा. दैट इज प्रियम्बल इन अ वेरी लेमन टर्म. सो व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रियम्बल? बिकॉज एम्बल मीन्स टू वॉक. एम्बल मीन्स टू वॉक एंड प्री का मतलब होता है बिफोर. सो प्रियम्बल वॉक्स बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन. Preamble walks before constitution, and that is the word preamble is all about. I am sure you will not forget this word. Now the next is perambulate. What is this perambulate? Perambulate, अगर आप देखते हो कि सोसाइटी के गार्डन में, क्योंकि आपकी वो उम्र नहीं आई है अभी तक, सोसाइटी के गार्डन के अंदर या बेसिकली आउटसाइड, mothers in the mall or let's say everywhere, they carry their small baby in a carriage. They carry their babies in a carriage. What is this carriage? Carriage को बोला जाता है pram. Carriage को क्या बोला जाता है? A pram. Why it is called as perambulate? Because mother is there. उससे पहले वो carriage को walk करके baby को उसमें बिठा के ले जाती हैं. वहां से word आया है perambulate. I'm sure now you got an idea how these words are related, how the word ambulance came into picture, and this is what the beauty of root words is. और इसीलिए root word को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. Let's move to the next. Next is the word related to food. Food. Yes sir, I am a connoisseur. Let's talk about some of the words related to food. So इसके अंदर by the way more or less the words मैंने बुखड़ के लिए यूज किए हैं, right? Someone who is बहुत ज्यादा खाना करता है. सारे words majorly उसी से related हैं. Let's see. First, I'll just talk with the very easy ones. Binge eating or binge drinking. We talk about a binge eating or a binge drinking, which means the words related to food, मतलब not in a proper manner. कई बार ऐसा बोला जाता है that we have an age of 21, if I'm not wrong, of entering into the bar and consuming alcohol. So कई बार ऐसा बोला जाता है it should be reduced. Not because we want to increase the revenue, because if we will reduce this, the students or the people who go or those young kids who have not attained that age of 21, what will happen is they will do this binge drinking, and when they will do this binge drinking, मतलब कोई उनको रोकने वाला नहीं है, probably they will spoil
they will be more spoiled. So it is better that you should reduce the age. That is binge drinking or a binge eating. Masticate मतलब खाने को जो बहुत अच्छी तरीके से च्यू करके खाए, that is mastication. Masticate. So let's see the next one. We are talking about sweet tooth. I don't have to explain what is this sweet tooth, which means जिसको मीठा अच्छा लगता हो. हमारे sweet tooth है सर. So कई बार बोलते हैं कई बार कई it's in my case, I'm just giving you an example. When I was about to get married, right? So my fiance, now my wife, now she was like, no, I don't have a sweet tooth, और मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है. So sweet tooth basically means they don't like sweets, okay? And then we are talking about glutton, a very negative word. A glutton, a very negative word, and so as gannet. So gannet and glutton, they both are negative words. और इसका मतलब क्या होता है? भुक्खड़, right? In Hindi we call it bhukkad, greedy person. They are always ready to drink or they are always ready to food. I mean eat. I'm sure you must be having some of your friends. कहीं पर भी खाने की बात हो जाए, चल भाई चलते हैं. शादी चल रही है, चल भाई नए कपड़े पहन के चलते हैं. हाँ. So that is glutton or let's say gannet. They are very much into food, right? जहाँ पर free का मिल जाए बस पहुंच जाओ, right? ठीक है. So they are very much, bhukkad kind of a people, greedy for food. Government and bonbear. Government and bonbear. ये basically दोनों जो words हैं, these are very positive words. These are very positive words. Basically they are pleasure seekers. They are connoisseurs. इनको खाना पसंद है. Not in the sense they भूखे हैं. They have their, they want good taste. They want that food should be, given to them in a proper way. It should be properly arranged. They want to explore different kind of varieties. Wherever they go, they will search for a good and a tasty food. So these are the people, bonbear and government we are talking about. Chocoholic, I don't want to say it. Someone who is fond of chocolates is chocoholic. So these are the words related to food, right? So ये आप words use कर सकते हो food के लिए. Right? Okay, guzzle. The word guzzle here at the last, guzzling basically means nigal lena. That is the word guzzle is all about. Right? So this is what the words where I'm talking about. And the last, when we are talking about on the list is, we have talked about this. Okay. Now the next is, we are talking about the words related to law. The words related to law. These are some of the words I thought you should know. What are these words all about? The first is accuse. Someone is accused of a murder. Riya Chakraborty is accused of a murder of Sushant Singh Rajput. Accused मतलब उसपे accuse किया गया है, उसके ऊपर ऐसा लांछन लगाया गया है या उसके ऊपर ऐसा बोला गया है कि she is accused of, उसके ऊपर ऐसा आरोप है that she is accused of his murder. Nowhere it is proven. She is still not the culprit, but she is accused. So that's how the word accused is used. That's how the word accused is used. The next on the list is capital punishment. आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया के अंदर कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए अभी डिस्कशन चल रहा है कि हमें कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. People say that capital punishment is against the freedom of liberty and all those stuff. And when we are fighting that, nahi, when we talk about a severe, crime like rape and the way Nirbhaya Kand or that girl in Hyderabad, unka kis tarike se brutal murder hua after rape, there should be a capital punishment. What is a capital punishment? Sazae maut. Sazae maut, फांसी देना is a hang till death is a capital punishment. Convict. Someone is convicted. पहले someone was accused. Accused के बाद उसके ऊपर बहुत बड़ा केस चला and finally he is convicted. मतलब वो आरोप जो है that accusation was there, that is now being proven and the one is accused now. The one is convicted now. Defendant and plaintiff. केस जो कर रहा है, someone who is filing a case. Someone who is filing a case is a plaintiff, and against whom
the case has been filed is a defendant. For example, in Sushant Singh Rajput and Riya Chakraborty case, plaintiff is Sushant Singh Rajput's family because they are filing the case, and defendant is Riya Chakraborty, that against her the case has been filed. And always in this case, when we talk about the plaintiff lawyer, the someone who is accusing, they have to prove that Riya Chakraborty was the one behind it. Riya Chakraborty will not defend herself because ऐसा बोला जाता है, the burden of proof always lie on the plaintiff lawyer. In this case, they have to prove that that guy has done, because जब मैंने वो चीज की नहीं, how will I defend? So that's why the burden of proof is always on the prosecution. पैरोल बेसिकली हमने वर्ड बहुत ज्यादा सुना था जब तक संजय दत्त जी जो हैं वो जेल के अंदर थे. पैरोल वर्ड बहुत ज्यादा बार हमने सुना था. व्हाट इज पैरोल? बेसिकली आपकी कुछ एज अ गारंटी चीज वहां रखते हैं. यू गिव सम मनी और यू गिव समथिंग एज अ गारंटी दैट यू विल कम बैक, यू आर गोइंग फॉर अ पैरोल. एंड ये पैरोल बेसिकली दिया जाता है बेस्ड ऑन योर आई वुड से आचरण, जिसको बोलते हैं बेस्ड ऑन योर द वे यू आर बिहेविंग while you are in jail or while you are सेंटेंस के अंदर जो आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उस केस पे पैरोल दिया जाता है. सो दैट इज द वर्ड पैरोल इज ऑल अबाउट. स्यू वी ऑल नो, किसी के खिलाफ केस करना इज स्यू. टेस्टिफाई, इफ यू आर टेस्टिफाइंग, द विटनेस टेस्टिफाइड, दे हैव पहचान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज द वर्ड टेस्टिफाई इज ऑल अबाउट. Verdict, when the judge is giving that sentence, final sentence, the Ayodhya verdict, the Sabrimala verdict, this is the final verdict, the final sentence by a judge is a verdict, right? So these are the words related to this. And the last we are talking about is phobia. The last is phobia. Phobia का मतलब हम सब जानते हैं. Yes sir, we know. Phobia का मतलब होता है डर. फोबिया का मतलब क्या होता है? डर. एंड द फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज agoraphobia. The first on the list is agoraphobia. What is this agoraphobia all about? Right? It's a fear from open spaces. Agoraphobia is fear from open spaces or fear from traveling alone. अकेले ट्रेवल करना या फिर बड़े बड़े स्पेसेस का से डर लगना, उसको हम लोग बोलते हैं agoraphobia. That's agoraphobia. Next is, there can be many phobias. I am just sharing some of these today. Hydrophobia. Yes, you guys are right. जो आपने सोचा है वो बिल्कुल सही है. Hydro means water. पानी के phobia को हम बोलते हैं hydrophobia. The next is pyrophobia. Fear from fire. आग से डर लगना is a pyrophobia. The next is cynophobia. डॉग से डर लगना. सर इनसे क्या का डरना, ये हमसे डर जाते हैं. So cynophobia is डॉग से डर लगना. Acrophobia is fear from heights. ऊंचाई से डर लगना is acrophobia, is ऊंचाई से डर लगना. Next on the list is एल्गोफोबिया. व्हाट इज दिस एल्गोफोबिया? ये एल्गोफोबिया जो है ये कोविड टाइम्स के अंदर कई लोगों को हो गया था. कई लोग इससे बहुत ज्यादा जूझ रहे थे. कई लोग इससे दे वर स्ट्रगलिंग विद दिस. एल्गोफोबिया इज फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट. फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट या फिर फियर ऑफ बीइंग अलोन. फियर ऑफ बीइंग अलोन इज एल्गोफोबिया. एंड्रोफोबिया. यस वी नो दैट सर, आदमी से डर लगना. आदमी हूं, आदमी से डरता हूं. राइट? आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं. नहीं. एंड्रोफोबिया अगर वो होता तो एंड्रोफाइल कर देते हम लोग. एंड्रोफोबिया इज फियर फ्रॉम मैन. फियर फ्रॉम मैन इज एंड्रोफोबिया. अरिथ्मोफोबिया. जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, बीबीए बैकग्राउंड के हैं, उनमें से कई लोग इस फोबिया से ग्रसित हैं. एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट. अरिथ्मोफोबिया, फियर फ्रॉम नंबर्स. Fear from numbers, गणित से डर लगना is arithmophobia. Next is ballonophobia. We talked about is not ballonophobia, ballonophobia. Fear from needles or pointed things is a ballonophobia. Next is cacophobia.
गंदगी से डर लगना, right? If you remember that सीरीज ब्रीथ, राइट? ब्रीथ सीरीज जिसमें अभिषेक बच्चन थे और उन्होंने सरदार जी इन द फर्स्ट वेरी एपिसोड उन्होंने सरदार जी को मारा था. दैट सरदार जी वाज स्ट्रगलिंग विद कैकोफोबिया, मींस उनको गंदगी से डर लगता था एंड यही गंदगी ने उनकी जान ले ली. कैकोफोनी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो. कैकोफोनी क्या था? बैड साउंड. तो कैको जब आपको पता है बैड, फोबिया अगर आपको पता है फियर. सो फियर फ्रॉम डर्टीनेस, फियर फ्रॉम बैड थिंग्स इज कैकोफोबिया. The next on the list is gamophobia. Gamophobia is fear from marriages. शादी से डर लगना is a gamophobia. शादी से डर लगना is gamophobia. And the last is herpetophobia. What is herpetophobia? Fear from reptiles. जो लोग छिपकली लिजर्ड से डरते हैं वो भी शायद यहां पर आ जाएंगे. आई एम श्योर काफी लोगों को होगा. That is fear from reptiles. I have herpetophobia. So these are some of the phobias we are talking about. So guys, this is what vocabularies are all about. I'm sure you loved the session. I'm expecting at least you got some interesting words from this particular session. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो please do write in the comment section below. Your feedback really matters a lot to me, and it will help us to improve us further, and we can deliver the content as you are expecting according to your expectations, right? So this is what just a minute guys, the last word is octophobia. Fear from number 8. Fear from number 8 is octophobia. So with this guys, we are coming to the end of this particular session on root words, and that's it from my side. Thank you for listening to this session, and as I said, I hope you have enjoyed the session. If yes, do write in the comment section below, and don't forget to be in touch with me on our YouTube channel or our Telegram channel. And wherever you have any difficulty, you want to know some good books, you want to know the reading habits, you want to know the pattern, do get in touch with me. My name is Prashant, signing off today from this video. Keep watching Ekoching. With